Assalamu alaikum, students. This is the Cascading Style Sheets second lecture. In the first lecture, we covered some topics. I am showing them on the screen. These topics are what is CSS, हमने स्कोर किया था. Why use CSS, इसका syntax मैंने आपको explain किया previous lecture में कि selector क्या चीज़ है and declarations हमारे पास क्या चीज़ है. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक एग्जांपल किया था नोटपैड प्लस प्लस पे हमने इसको रन किया था एंड यू पीपल सी हाउ द सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन वर्क हेयर. ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये हमने रन की थी. ओके, इसके बाद हमने बात की कमेंट्स के ऊपर. सीएसएस के कमेंट्स किस तरह काम करते हैं और इसको हम किस तरह रन करते हैं. कमेंट्स आर बेसिकली द कोड दैट इज डजंट एग्जीक्यूटेड व्हाइल व्हेन वी रन द प्रोग्राम. सो यहाँ पे नीचे अगर आप देखें, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द कमेंट. Just like the C and C++ comment syntax, we enclose the comments in this forward slash and star symbols. अच्छा, आज हम बात करेंगे सी से सेलेक्टर्स की डिटेल से, क्योंकि वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ these सेलेक्टर्स. सेलेक्टर्स बेसिकली काम क्या करते हैं, दे आर यूज टू फाइंड और सेलेक्ट द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल. यानी आप किसी भी HTML एलिमेंट को इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट इट, सो यहाँ पे जो है ना, आप इसी HTML एलिमेंट को कोई स्टाइल वगैरह दे सकते हैं. ओके, थोड़ा सा नीचे अगर मैं ड्रैग कर दूँ इस पेज को, you can see it, the CSS element selectors. Here the one of the examples you already covered, like we have paragraph tag, this is the element and we want to style them with these property and values. नीचे जो है यहाँ पे we have multiple types. So the first type is here is the CSS ID selector. अब ID जो है selector, ये एक टाइप है और इस ID सेलेक्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ID का एट्रीब्यूट जो है ना वो यूज़ करेंगे HTML एलिमेंट के साथ. अब ये इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो इट विल बी क्लैरिफाइड हाउ द ID सेलेक्टर वर्क्स. इस यहाँ पे हम हैश सिंबल का यूज़ करेंगे. लाइक you can see in this example, when you want to style any element, तो आप क्या करेंगे, आप पहले से जो है हेड सेक्शन के अंदर ये कोड लिखेंगे लाइक हैश के साथ para1. नाउ दिस para1 इज अ यूजर डिफाइंड नेम, यानी मैंने उसको अपनी तरफ से दिया है. आई कैन राइट एनीथिंग हेयर, लाइक इफ आई से ABC XYZ, I can add anything here after the head symbol. इसके बाद नॉर्मल आपकी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं और प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के यहाँ पे डिक्लेरेशन मौजूद है. यहाँ पे देखें HTML हेड सेक्शन, स्टाइल एट्रीब्यूट स्टार्टिंग है, ये इसकी एंडिंग है. इन बिटवीन दी स्टाइल एलिमेंट यहाँ पे है हैश para1, इट इज़ द सेलेक्टर नेम एंड एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे ये ख़त्म हो गया. हेड सेक्शन को क्लोज कर दें, बॉडी स्टार्ट कर दें. बॉडी में क्या है, नाउ P इज़ द एलिमेंट, ठीक है, यानी पैराग्राफ टैग जो है इसके ऊपर ये इस टेक्स्ट है और ये इसका एंडिंग है. अब हम चाहते हैं कि हम इस पैराग्राफ टैग के ऊपर जो है ये ऊपर के स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे. अब हैश para1 यहाँ पे लिखा गया है, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे लिखें ID इज इक्वल टू डबल कोट्स एंड para1, यानी यहाँ पे आप हैश नहीं लिखेंगे और जो para1 है वो आप यहाँ पे लिख देंगे. लेकिन इससे पहले ID इज इक्वल, इट इज बेसिकली द सिंटैक्स कि आपने इसी एलिमेंट के एंगल ब्रैकेट के अंदर ही आपने ये लिखना है. अब होगा क्या कि इस पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर ये जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ टैग मौजूद है दूसरा, लेकिन रिमेंबर दैट वी we did not we doesn't we do not apply this style here.
सो इस पैराग्राफ के ऊपर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द सेलेक्टर। ओके, सो ये इसका सिंटैक्स था। इसके बाद दूसरा जो है वो है सीएसएस क्लास सेलेक्टर। अब क्लास का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका सिंटैक्स चेंज करेंगे। The class selector selects the HTML elements with a specific class attribute, यानी पे class attribute आएगा, and this class selector starts with a dot or period symbol। यहाँ पे अगर आप देखें आईडी के साथ हैश था और क्लास सेलेक्टर के साथ जो है ना डॉट आएगा, यानी डॉट सेंटर, डॉट पैरा वन, डॉट एनी नेम यू कैन चूज। इसके बाद स्टाइल्स हैं, ठीक है, एग्जांपल को देखें, डॉट सेंटर स्टाइल्स एट्रीब्यूट एंडिंग। बॉडी में क्या होगा, अब बॉडी में देखें H1, यानी हम चाहते हैं कि हम हेडिंग 1 के ऊपर जो है ना ये ऊपर जो स्टाइल है वो अप्लाई करें। तो पहले हमने लिखा था आईडी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास इज इक्वल टू रिटर्न नेम, ठीक है, यानी डॉट को छोड़ के जो है ना आप रिमेनिंग पोर्शन लिख देंगे। सो एक हमारे पास हो गया आईडी सेलेक्टर और ये हमारे पास क्लास सेलेक्टर। Similarly, with the paragraph tag, we have also applied this style with the class is equal to center value attribute or selector. So this is one of the example you saw above. Okay, you can also apply specify that only specific HTML elements should be affected by a class। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है, अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो स्टाइल है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर या किसी ख़ास एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि यू हैव टू पुट द एलिमेंट और टैग नेम बिफोर द डॉट सिंबल। यानी ये जो स्टाइल है टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर इज इक्वल टू रेड, इसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ पी के ऊपर आएगा, बिकॉज वी हैव रिटन हेयर दैट पी डॉट सेंटर, यानी जो सेंटर क्लास लेटर है इसका इफेक्ट सिर्फ पी के ऊपर आएगा। इफ यू राइट h1 हेयर, इफ यू राइट टेबल हेयर, इफ यू फॉर्म डॉट सेंटर, सो उसी टैग के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। सो यू कैन आल्सो चूज अ स्पेसिफिक HTML element। okay, the third type is CSS universal selector। ये थर्ड टाइप है। इसमें अगर आप देखें देयर इज अ स्टार सिंबल, दिस स्टार सिंबल इज बेसिकली showing that it is universal, its effects will be recorded on all the HTML elements present on the web page। तो यहाँ पे अगर आप देखें नीचे एग्जांपल में स्टार, and after the star there is a normal code as you saw earlier। नीचे एग्जांपल में जो है you can see in this between these style elements in the head section star and the two attributes। body section में अगर आप देखें here you can see there is h1 hello world, p पैराग्राफ टैग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। अब इन सारे जितने भी हमारे पास HTML के एलिमेंट्स हैं, all these elements will be affected because we have chosen a universal selector। ठीक, तो इन सब के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। ओके, there is a fourth selector, it is called CSS grouping selector। the grouping selector selects all the HTML elements with the same style definition। अगर आप चाहते हैं कि हम एक या एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि हम उन सब के ऊपर जो है एक ही तरह का एक स्टाइल ले आए, तो फिर आप उनको जो है एक ग्रुप के फॉर्म में ला सकते हैं। लाइक इन द एग्जांपल बिलो you can see here we have 3 different HTML elements with h1 h2 and p tags, and we have some styles। so now if you have used these 3
elements in your body section of the HTML page. So all these three will be affected with these two attributes given. So this was the end of lecture number 1 on cascading style sheets. Now I'm going to show you some practical examples on these class selectors. Okay जी, तो ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है एज यू सा इन द प्रीवियस लेक्चर. दिस इज़ द प्रीवियस फाइल जो हमने रन किया था विद द नेम डेमो css.html. होप आपको याद हो. In this example, I executed a program using these style sheets. अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन करूँगा और इसमें मैं आईडी सेटर को जो है ना वो यूज़ करूँगा. So here in the head section I am going to enter the head symbol, hash. This is the head symbol, and like we have entered in the example para 1, I will write here, let's suppose ABC. This is selector name. Its color is red, font size is 14 pixels. Okay, I'll remove the remaining part. Okay, so this is the ID selector syntax in the head section, while in the body section you have to enter ID is equal to डबल कोट्स यहाँ पे लिखें ABC. ठीक, तो आईडी के साथ जो है ये नाम आ गया सेलेक्टर का. ये आप देख रहे हैं ग्रीन जो इसका बैकग्राउंड कलर है. सिंपली शोइंग दैट दीज टू आर रिलेटेड रिलेशन. ओके, अच्छा यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हम H2 पे भी ये स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो यू कैन एंटर हियर ID is equal to ABC. But suppose I am not applying the same style on H2, so leave it. Save the file. Okay, now run it. On the desktop I have saved that folder with the name HTML programs, and here you can see uh, this file. I'm going to run it. Okay, so you can see that the style has been applied on the first paragraph. Okay, now let me make some changes and then check it to show the effect of the execution. So here you can see I'm just changing the font color to green. ठीक. Apart from this, I'm increasing the font size from 14 to 18. ये भी हो गया. Control S सेव करें and now go to the web browser and refresh it. Okay, so the color is changed to green and the font size is also increased. Now if I want to apply the same style on the second HTML element, so here you can see we have H2. I will simply add the ID attribute equal sign and ABC. Control S सेव करें, जाके वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करें. So this is the effect of the style sheet. So this was a demo of the ID selector. Now I am going to make some changes here, and I will add, well, I will simply copy paste it here, and for class selector I will put here a dot ABCD.
Okay, the name is changed. So this is the class selector, and I want to apply this class selector on the h2. So what I'll put here, the class attribute equal sign a b c d. Okay, so in this one file I am going to demonstrate the two different class selector and id selector. Now to show its effect, I'm simply changing its color from green to, let's suppose, yellow, and I'm increasing its fonts from 18 to 20. Okay, Control S and refresh the file. Well, it's the yellow color. uh, 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 Let me change it to some other good color that you can see it easily. Why not orange? Yes, it's orange. I save it and refresh the browser. This is the orange color. So this was the second class selector. Now apply another one. That was the third one is the universal selector. So its syntax is to enter a star, and after a star you, well, I'll copy paste it. Okay, so let me comment it. You will see how we insert comments also. / star, this is a universal selector. Okay, star with / okay. So in this file you can see we have three different class selectors. You already saw the demo of the two, and this is the third one. Now let me save it and refresh it. Well, it doesn't work. Let me check the error if there is any. Okay, let me remove these two lines. Now we have a universal selector, and let me save this file and execute this. So after execution you can see that the style has been applied on the all the HTML elements given in the file. Now the reason is that that this star is applied by default on all the elements. If I add another element here, Control C and Control V, and if I make it heading 3 and also heading 3. Now what do you think? Will this style will apply on this third element? Of course it will. Save it, refresh the page, and this is the heading 3. So this was the third selector. Now the fourth one is the multiple elements application. So now it should be your home assignment. Apply the fourth one. Okay guys, so this was the end of this lecture, and thank you for watching. Inshallah, in the next lecture I'll proceed with a new topic. Stay blessed.